very much, Rashmi, for the introduction. I hope I'm audible. Yes, ma'am. So, since we are connected technically, there was a glitch in the camera that normally I use on my camera, on my desktop. So I'm using a temporary one. I would begin by welcoming everybody to this seminar today. And I'll just take a moment till I get my things right. Yeah, all right. So very warm welcome to all the students of Lloyd Institute of Engineering and Technology. We are really, really proud to have you with us, and congratulations for having been selected and for having chosen Lloyd Institute of Engineering and Technology for your further education. I will try and keep my talk, the 15 minutes that I'm going to engage with you, in both English and Hindi, so that language does not become a barrier between both of us. And आज आपका पहला दिन है virtually हम लोगों के साथ. So it's very exciting and we are really happy to welcome you virtually. In fact, we are waiting for colleges to reopen very fast. As soon as we get government directions to open the colleges for undergrad students, we shall be amongst the first institutes to open the college, because college is nothing without the students. Now we have faculty, we have classrooms, we are getting ready hygienically, and taking all the corona precautions to welcome all of you. But without students' presence, a college is a vacuum. So as soon as we receive government directions and regulations, and we receive a nod from the university that we can open the college for first year students, though AICT has given a long date, लेकिन हमारी कोशिश है कि सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर में कभी भी हम इंस्टीट्यूट्स को फिजिकली खोल सकें. और we will wait, that you will in fact get a notice also 15 days in advance. We will let you know, ताकि आप लोग अपनी bookings वगैरह कर लें आने के लिए. You can fix up your place to stay, whether in a hostel or a PG, or if you're staying with the family or with friends. So we'll give you 15 days notice in advance so that you can come here comfortably and get settled down. Barring that, a brief introduction was given by Rashmi madam. So I'm Vandana and I have been with this institute, Lloyd Group, since 16 years now. And it has been a beautiful journey. We have seen Lloyd grow from where we were just a 4-room college to now where we have got 10 colleges. Yes, 10 colleges, including a law college and 2 pharmacy colleges. We have got a polytechnic. We've now got an engineering college, and we've got education department, management. We've got BBA, MBA. We've got PGDM. So starting from a 4-room college to a journey of 10 colleges. Who can be successful in this world? आप सबने biology पढ़ी है 9th, 10th में. And we always heard about survival of the fittest. So the one who is most fit will survive in the industry. And the vision of our founder president, Mr. Manoj Therani, has always been to give the best to the students. College, like I told you, is vacuum without students. So our success lies in your success. Our president believes that our success lies in skilling you. वो कहते हैं अगर एक बच्चे को भी हमने properly place कर दिया, in any corporate interview. For example, today we are having interviews from a company. 10 students are sitting, लेकिन एक बच्चा भी उसमें successfully place हो गया, and he is happy for a couple of years and getting a placement package as desired. So we are successful, and the 9 remaining will sit for the next interview, and then so on, it will go on. So he believes in skilling the student to get the right placement. जहां बाकी कॉलेजेस academics पे फोकस करते हैं पहले और फिर प्लेसमेंट्स पे, यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग है. We take employment first. So we go to the employer, we go to corporates, we go to industries to find out what is their requirement. And then we train our student according to the requirement. And that is the need of the day. That is the need of the industry. I am myself from the corporate, and when I speak to my colleagues of that time, or when we speak to other industries or corporate people,
दे टेल अस कि बच्चा तो सबसे अच्छे कॉलेज से भी आ जाता है, इवन आईआईटी से बच्चे आ जाते हैं, लेकिन बच्चे में वो स्किल नहीं है कि वो इंडस्ट्री में आते ही पहले दिन से सक्सेसफुली काम कर सके। तो आप बच्चे को ऐसे ट्रेन करिए कि बच्चा पहले ही दिन से तैयार हो, विच इज कॉल्ड कॉर्पोरेट रेडीनेस। You don't have to spend time here mugging just to write your exam. Our focus is totally experiential learning. We want you to get ready for future employment, not employment of 2021, but employment of 2025 when you pass out from here. We are going to prepare futuristic students, and skill you for the corporate or the kind of industry that you're going to be joining. अगर 5 साल 4 साल पहले ये सब कॉलेजेस ने सोचा होता तो एआई एमएल, आज हर एक इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट्स बोलते हैं कि उनके पास एआई इंजीनियर्स नहीं है, एमएल, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, दे डोंट हैव पीपल हु नो दिस, बिकॉज तब ये कॉलेजेस ने 4 साल पहले नहीं सोचा कि हम ऐसे बच्चे प्रिपेयर करें जो 4 साल बाद इस नौकरी में जा पाए। आपको आज जॉब नहीं करना है, वी डोंट हैव टू प्रिपेयर यू फॉर टुडे, we have to prepare you for 2025. For example, yesterday, I will share incidents also. Yesterday, I visited a factory who do electroplating for automobiles like Maruti, even GM Motors, even Jaguar, they do electroplating. So we got a vision from them that we are not going to set up automobile labs for you here, which depend upon old time, concepts. We are not going to give you, mechanical engineering concepts जो आज यूज होते हैं। हम आपको वो कॉन्सेप्ट्स देंगे जो आज से 4 साल बाद इस्तेमाल होने हैं, like electric cars. So we are going to tie up with companies who work for electric cars, क्योंकि कुछ साल बाद बाकी सब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट होने वाली है। It is going to be all electrification, all digitalization. We don't have to prepare you for jobs today. But what happens later? What happens in the future? तो जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे तो आप बाकी सबसे आगे रहेंगे। सी, जब 10 लोग इंटरव्यू में बैठेंगे अलग अलग कॉलेजेस के और एक वैकेंसी होगी तो who will be selected? You will be selected because you are getting prepared for that job. And that is what is our vision here. That is what is our mission. और उसी के बेसिस पे ये बीटेक डिजाइन किया गया है। So Lloyd Institute of Engineering and Technology was earlier called Skyline Institute of Engineering, which was established around 17 years ago. That institute, Skyline, was the only institute which was NBA accredited in 2008, and that was the only institute at that time. So, Sana, could you please remove the screen? Yeah, thank you. So that was the only institute which had NBA accreditation, which is called, National Board of Accreditation. Asad, would you mind muting yourself, please? Mohammad Asad, please mute yourself. Thank you. So that is the highest accreditation that any institute can get. So Skyline was that institute at that time. We have been very fortunate to have close association with them. And now the institute is called Lloyd Institute of Engineering and Technology. And we are going to be running this year with an absolutely new concept, which is called Co-op, as in COOP. Co-op is something जो आपके शायद counselors ने आपको बताया भी होगा पहले, but this is our first interaction. And this is going to be our flagship program. So I would want you to understand. कोई doubts हो तो आप बाद में मुझसे पूछ भी सकते हैं. So co-op is cooperative, COOP, cooperative. Now this cooperative program runs in cooperation with corporates or industries. And how it runs is, we have already signed MOUs with around 36 companies now. These companies are in various verticals like corporates, like computer science, like mechanical engineering, electric, like artificial intelligence, like solar power, like automobiles. And they would be interning you from first year onwards. This concept is very prevalent in the United States of America. It is present in Canada. It is present in a lot of European countries. क्योंकि वहाँ के देश जो हमारे यहाँ IIT ने भी नहीं किया है, वो बिलीव करते हैं बच्चे को स्किल करने में,
हम चाहते हैं आप सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बने, बल्कि आप स्किल हो. So in the first year, how it will happen is you get to meet these co-op partners, which will be from these various backgrounds like computer science or mechanical engineering, various streams, and they will be interacting with you. You will get mentors from these corporates from first year onwards, and they will select you. So based on what kind of internship is required in their industry. Then after that, in the second year, you get to go and work live in the industry. Now, some companies want you to start interning from first year, some want it from second year, some want it from third year. The total period of internship during these 4 years of btech will be around 6 months. This could be paid or a not paid internship, but the kind of exposure that you're going to get is going to be immense. आप 4 साल उतना लेबोरेटरी में नहीं सीख पाएंगे या क्लासरूम में नहीं सीख पाएंगे जितना आप लाइव एक कॉर्पोरेट मेंटर के साथ सीख पाएंगे. एंड इट इज एन एक्चुअली वियर्ड एनालॉजी, बट बिकॉज आप लोग अभी नए नए स्कूल से निकले हैं, from a very closed atmosphere where you used to idealize Bollywood and, understand Akshay Kumar and all these people. So probably you will see, so what happens when MS Dhoni was being made, the actor of MS Dhoni spent some time with MS Dhoni actually to understand his lifestyle so that he could act so well on the screen. Similarly, because you have to work on the corporate and the industry, so the better you are connected to the industry, the more you are connected to them, the better skilled you will be. You can make your own LinkedIn profiles. You can add the certifications that you are learning. You can add the skills that you learn in the factory. And that experience is going to be absolutely amazing. So this co-op program was explained to the chairman of AICTE, that is All India Council of Technical Education, New Delhi. This is a body which approves all the colleges in India. And when we explained this to Professor Anil Sahasrabudhe, who's the chairman of AICTE, he congratulated Lloyd. He said, you are doing a wonderful job in bringing co-op program to India, though it is a lot of hard work for the institute. क्योंकि आप कई institutes देखेंगे, they don't even have one MOU with an industry. And for Lloyd, before starting the program, signing 36 MOUs with different industries was a lot of hard work for the college. But we are getting ready for you. Now it is on you to absolutely groom yourself and get selected in any of these companies of your choice, so that you can be skilled and you can fly out of the college with absolutely marvelous placements. And we are looking forward to that. As soon as you come to the college, within the first 15 days, you're going to be meeting all your co-op partners within the campus. As far as other colleges are concerned, Lloyd has a Lloyd Law College. The rankings are really good, and it all comes under the Lloyd umbrella. We have a common president, who's Mr. Manohar Therani, who takes care of all the institutes. So the vision, mission, quality policy is uniform across all institutes. The kind of growth that we have achieved in all of these schools has been parallel. And we wish and we hope that our engineering institute is going to be the best of all the institutes that we have under Lloyd Group. You would have known, and maybe some of you might not be apprised, that Lloyd has been ranked #1 by India Today and the Outlook magazine for getting highest placement offers consecutively in the last 3 years. And that is quite an achievement. Even Lloyd Business School has been ranked among top 25 business schools of North India. The Pharmacy School of Lloyd also is NB accredited, which is the highest accreditation given to any college in India. And our engineering college is the pioneer in bringing co-op to India, co-op partnerships to India, and very well applauded by AICTE. I hope we have a wonderful time together once you come to the campus. Couple of little things that students have been asking the counselors is, because I'm present on this forum today, and I would like to clarify
You've been asking about AICTE approval. So the approval letters are with the team. When you come to the campus, you can have a look at them. The AKTU approval letters are yet to arrive in the campus. So maybe by tomorrow or day after, we'll be getting the letters. We'll send it to you. And third thing is about the loan. So there is for students who are applying for loan, there is a list of documents which is mandatorily needed by any bank. For those students who need loan, can communicate with the counselors that they have been talking, and they will send you the list of documents. Once you have those ready, we have a separate loan department here through which we shall be very happy to assist you in wherever you need us. As far as the college opening is concerned, which was also a doubt amongst many people, we haven't yet received any regulation notice or circular from the university or the government, though we are ready. We have already started with one of the courses in management. As soon as we receive any regulation, we shall be the first ones to start, and it will be somewhere around October, but you will receive a 15-day notice from us so that you can make your travel arrangements and stay arrangements. There is faculty waiting for you. We have got very wonderful faculty in all departments across computer science, across mechanical, electronics, electrical, and civil departments. We are, thrilled and waiting. We are getting ready to welcome you. And this engagement that we have started, I would, request all of you to participate in this engagement program that we have started today. And we shall be doing these programs under the guidance of Dr. Manish Saraswat, who is the HOD of Mechanical. And he shall be chalking out the plan every Wednesday and Friday. You can join, you can even have your parents join the program. And ताकि जब तक कॉलेज खुलेगा आपके दिमाग की बत्ती जली रहेगी और आपको कुछ भी और पढ़ने का मन करेगा. So whatever you listen to our guest speakers in this engagement sessions, I'm sure you will Google about it, you will try and read more about it, because the more we read, the more our ignorance vanishes. So why stay ignorant? Let's read more, let's understand more, and let's not waste time only. We have done enough. पिछले 3-4 महीने में आपने 12th के बाद बहुत समय खराब कर दिया है. Now we have to focus on our career, and we walk one step with you, and we expect you to walk one step towards us so that we can bring out the best in your careers. With this, I can see Mr. Rahul Naidu, our guest speaker for the day, has joined us. And I would request Rashmi to take it further from here by introducing Rahul sir so that he can take his session. Again, very, very warm welcome to all the students, and we hope to see you very soon in the campus. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for your words of wisdom. One day, definitely, a student will know they have joined the best engineering college in India itself. Now, I would like to welcome Mr. Rahul Naidu, Chief Advisor, Engineering Services, the SMAC Competency Services Private Limited. Welcome, sir. Sir, may I be permitted to give your brief introduction, your achievements in chosen fields? Yeah, please. Thank you, sir. Mr. Naidu is graduate in mechanical engineering with 24 years of experience in business development. He started his career with deployment of technology in product development and manufacturing. With expertise in digital product development, he worked as consultant for implementation of technology and process automation. He possesses opulent expertise in elaborate business development plans, designs, and implement process to support business growth through customer and new market definition. He is one of the most pioneer in starting skill development center catering to the need of manufacturing industries with network of dedicated training centers in more than 15 cities and trained 30,000 plus workforces under his leadership. Welcome, sir. I invite Mr. Rahul Naidu, the chairperson of the event, to please take over the session. Thank you, Rashmi. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Yeah, thank you. A very warm welcome to all of you. And I'm sorry I was late. I was stuck up in a meeting. So
without wasting much of time, I have a small presentation with me, which I wanted to share with all of you so that we can take this discussion in a good direction. And I think the audience are mostly the first year students who have just come out from the 12th standard and starting their career in the new direction, that is undergraduation program. So it's a paradigm shift in the life cycle. Being in a school and being in a college is a two different way of life, to say it. So I just wanted to show a presentation. Is my screen visible? Yes, sir. Thank you. So I'll just start with a brief introduction about myself and my company. I think so. My name is Rahul, and I am a mechanical engineer. I graduated back in 1997 from a college called as VRCE, at that time now known as VNIT. It's a National Institute of Technology. At my time, it was a regional engineering college. So I graduated from there, and I have been working with different companies. And we currently are working on a skill development project where we have technology partners like Dassault Systems. So Dassault System is a French company, uh, which is also one of the manufacturers of Rafale planes, which we have must have heard. Recently, Government of India, Indian Air Force has bought out Rafale fighter planes. So that same company, sister concern is Dassault Systems, the French company. The second is PTC, which is an American company. It's a Nasdaq listed company. And third is Mastercam, which is again an American company. So these are the companies which are helping us implementing this project in India. So these are all global multinational companies which are helping us to create global engineers in India. And about a brief about DCS, that's my company. So DCS was started by Mr. Vijay Kumar, who is a graduate from IIT Kharagpur, who started this company somewhere about 21 years back. And we have offices in different part of the city. This is a brief profile. We are basically an advisory and a consultancy firm, and we work very closely with the corporates as a single window service provider when it comes to digital engineering services, HR services, IoT services, business and strategic management, stress assets management, audits process. So we help the corporates when they are stuck up in a problem. We go and help them with the solution. So we have a team of highly skilled workforce in our organization who are working very closely with the corporates. These are our achievements on this project. So we currently have somewhere about 8 engineering colleges and universities across India which have adopted our skill development process and systems in their universities and colleges, which is from North Haryana to South Tamil Nadu. We have a footprint on this direction. So very important. So to all of you is, let us understand few things about engineering. As per me, या मेरे हिसाब से, इंजीनियरिंग इज अ एवरग्रीन करियर, इज एवरग्रीन. ये कभी भी ये कम नहीं होगा. ये हमेशा एवरग्रीन रहेगा. बट रिसेंटली कुछ सालों में ऐसा हुआ था कि लोगों ने इंजीनियरिंग के ऊपर से थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट किया था. काफी लोगों का ये कहना था, जो लोग 12th करके बाहर निकलते हैं, कि इंजीनियरिंग की जगह हम कुछ और करेंगे, क्योंकि लॉट ऑफ देम फेल्ट दैट इंजीनियरिंग इज नॉट अ राइट चॉइस, बिकॉज इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स का बड़ा चैलेंज है. काफी चीजें बताते थे वो लोग. तो जब हमने ये चालू किया था प्रोग्राम, तो मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रहा था, बीइंग एन इंजीनियर, कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द एजुकेशन सिस्टम. बेसिकली इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या रॉन्ग जा रहा है. हमारे समय में सबसे पहला चॉइस बच्चे का ये रहता था कि आइदर वो इंजीनियरिंग करे या मेडिकल करे, उसके बाकी सब उसके बाद आता था. पर आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को इंजीनियरिंग और मेडिकल इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस, इट इज बिकमिंग अ सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस. व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, एंड दैट वाज अ एरिया वेयर वी वांटेड टू फोकस. अभी सबसे बड़ा पॉइंट था कि हम इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं. हम इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें करियर बनाना है. करियर किस लिए बनाना है, यानी हमें एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए, एक अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, अच्छा लाइफ रहेगा. अच्छा लाइफ रहेगा तो अच्छा फैमिली रहेगा, आपका खुद का घर रहेगा. तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था कि जॉब
नहीं मिल रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस था कि जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। मैं एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से का पास आउट हूँ, जिसको आप लोग आजकल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं आप लोग। हमारे यहाँ हमारे समय में या आज भी मेरे ख्याल से द प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट 100%। 100% इन ऑल प्रीमियम कंपनीज आते हैं हमारे यहाँ पर। द एवरेज सैलरी, द पैकेज इज समवेयर अबाउट 8.5 to 10 to 12 लाख का एवरेज सैलरी पिकअप होता है कैंपस में भी। इवन आई वाज हायर्ड इन द कैंपस इंटरव्यूज। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग नाउ? दैट इज समथिंग वी वांटेड टू एनालाइज एंड वर्क ऑन दैट। तो इसमें एक बहुत बड़ा चीज मैंने ये देखा कि अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोग को, जो आप कोशिश करो, इवन द फैकल्टी मेंबर्स आर हियर, इसका थोड़ा स्टडी करो आप सब लोग। अगर आप एक चीज समझोगे कि what is the percentage of companies that are coming for doing a campus hiring, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ जॉब तो कैंपस हायरिंग है, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग करते हो तो आपको कैंपस में ही कंपनीज आते हैं लेने के लिए। what is the percentage of companies that are coming for hiring student in the campus? You will be astonished to hear the percentage. It is just 1% of the companies which are coming for campus hiring, just 1%। आई एम 1% से भी कम है, लेकिन मैं आपको 1% बोल रहा हूँ। यानी कि 99% जो कंपनीज इंडिया में है आज, कहीं पे भले नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात कर ले आप, या फरीदाबाद की बात करें, या आप दिल्ली, या मैं जहां से आता हूं, मैं बेसिकली पूना से हूं, महाराष्ट्र से, या बैंगलोर या चेन्नई, ओनली 1% ऑफ द कंपनी कम फॉर हायरिंग स्टूडेंट इन द कैंपस। और वो 1% के कारण इतने बच्चे जो आज जिनको कैंपस से मिल रहा है, अगर ये 5% भी हो जाए, तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है आज, उन सब के बच्चों को आराम से अच्छे नौकरी मिल जाएंगे। ये सिर्फ 1%। मैम, आई एम ऑडिबल एंड माई स्क्रीन इज विजिबल? जस्ट फॉर Yes, कंफर्मेशन। sir. All good. All good. Yeah, good, good. Thank you. If anything is missing because I am not able to see my network, so just ping me or give me a call. Definitely. Okay, Definitely. thank you. Because it is very difficult without seeing people talking to them. At time it becomes very difficult. Anyhow, so जस्ट इमेजिन कि अगर ये 1% को मैं 5% लेके चला जाता हूं, या 10% ऑफ द कंपनी जो इंडिया में है आज, वो आके कैंपस हायरिंग करे, तो प्लेसमेंट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। और सबको जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज, ये बाकी लोग आ क्यों नहीं रहे कैंपस में? आज अगर मैं एनआईटीज की बात करता हूं, मैं आईआईटीज की बात करता हूं, वहां 100% प्लेसमेंट है और अच्छा प्लेसमेंट है, पर बाकी जगह क्यों नहीं आ रहे? वेयर द थिंग इज गोइंग रॉन्ग इज समथिंग विच वी नीड टू एनालाइज। आज की डेट में इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं आते हैं कॉलेज में बच्चों को हायर करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस वर्कफोर्स चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक फ्रेशर को हायर कर रहा हूं, तो वो एक लायबिलिटी हो जाएगा। जस्ट मैम, Hindi is okay. People understand. There is no foreign national students in your this meeting. No, sir. Hindi, This English is good. good. Thank you. So they see students as a liability. उन्हें लगता है कि हम इन्हें हायर करेंगे, इन्हें सिखाएंगे, कब सीखेंगे, कब आउटपुट देंगे, तो वो कैंपस हायरिंग के लिए जाते ही नहीं है। वो लोग प्रिफर करते हैं कि मुझे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी मिल जाए तो हम लोग उनको ले लेंगे, लेकिन हम फ्रेशर्स को नहीं लेंगे। तो वेयर इज द चैलेंज हैपनिंग? ये पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आपके लिए सबसे अच्छा चीज है कि योर कॉलेज लॉयड हैज अंडरस्टूड दिस थिंग्स, योर होल मैनेजमेंट हैज अंडरस्टूड दिस थिंग्स, एंड दे हैव कॉल्ड मी कि हम लोग विल डू समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर देम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किल। स्किल हम किसे बोलते हैं वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वेग वर्ड है स्किल। The ability to apply your knowledge to a practical application is known as skill. The ability to apply your knowledge to a practical application is known as skill. अगर आपको जो नॉलेज है, मैंने काफी सर्वे किया था इसमें, काफी कंपनियों के लोगों से बात किया मैंने। यू नो दे व्हाट दे सेड टू मी, दे सेड दैट students who are coming out of engineering college today are very good, have a very good knowledge. उनका नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। The knowledge is good, the professors are good, the infrastructure of college is good. Today
वी हैव गूगल, अगर आपको कुछ भी चीज पता नहीं है आप इमीडिएट हम फोन खोलते हो और वहां टाइप करके देख लेते हो और आपको गूगल में उसका आंसर मिल जाता है। व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग देयर वाज नथिंग लाइक अ टैब, और कंप्यूटर्स बहुत रेयरली थे। हमें कुछ चीज नहीं समझ में आता था तो हमारे पास सोर्स था एक लाइब्रेरी हमारे कॉलेज का, और फिर हमारे प्रोफेसर्स और जनरल्स। ये चीज से हमें पता चलता था क्योंकि देयर वाज नथिंग लाइक गूगल। बट टुडे यू हैव ऑल दिस थिंग्स, सो नॉलेज इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज। द चैलेंज इज हाउ टू अप्लाई द नॉलेज। ये अप्लाई कैसे सीखना है ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। इसलिए मैंने लिखा है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एक्सपीरियंस इज द एबिलिटी टू यूज योर नॉलेज इन सम एप्लीकेशन। आज जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बाहर निकलते हैं उन्हें नॉलेज बहुत रहता है, लेकिन हमने उन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया ना तो वो उनको ये नहीं समझ में आता कि हम इसमें करें क्या, प्रोजेक्ट में स्टार्ट कहां से करें, कैसे इसको कंक्लूड करें। वही समझ में नहीं आता उन्हें, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है चीजों को करने का। आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस या बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल दिया है। व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स? इट इज ऑल ट्रेनिंग सेंटर्स। जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे वो आज स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बन गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स इज गुड, मैं ये नहीं बोलता हूं कि ट्रेनिंग सेंटर गलत है, लेकिन व्हाट इज ट्रेनिंग सेंटर? ट्रेनिंग सेंटर इज अ प्लेस वेयर दे आर अगेन गिविंग यू नॉलेज, नॉट एक्सपीरियंस। जो नॉलेज आपको आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिला या आपके जो भी एजुकेशन में नहीं मिला, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप चले जाते हो ट्रेनिंग सेंटर, जहां आउटकम इज नॉलेज नॉट स्किल। ये चीज हमें क्लियर रखना है। तो इंडस्ट्री में काम करना और वहां जाके सीखना और ट्रेनिंग सेंटर में जाना दो अलग चीजें हैं, इसके कंफ्यूज ना करें आप लोग कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में जा रहा हूं वहां कुछ सीख रहा हूं और मैं एक इंडस्ट्री में जाके कुछ सीख रहा हूं। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये डिफरेंस आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग ने इसके लिए क्या किया था कि मुझे एक चीज बहुत क्लियर था मेरे दिमाग में कि हमें स्किल वर्कफोर्स बनाना है। पहला स्किल वर्कफोर्स मतलब एक्सपीरियंस वर्कफोर्स। एक्सपीरियंस वर्कफोर्स मतलब उसे इंडस्ट्री में जाके सिखाना है कि कैसे करते हैं। अब बच्चा जो अंडर ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है वो इंडस्ट्री कैसे जाए? आप ग्रेटर नोएडा में आपका कॉलेज है, आप डेली तो आके इंडस्ट्री जा नहीं सकते हो। इट इज अ बिग चैलेंज फॉर यू एवरी डे गोइंग टू इंडस्ट्री। कई बार इंडस्ट्री एंटरटेन नहीं करते हैं आपको कि डेली आ जा रहे हैं आप उठ के। तो इसे हम कैसे हैंडल करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारे सामने। तो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री इनसाइड लॉयड। हमने एक प्रपोजल लाया कि क्यों ना हम एक इंडस्ट्री आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में खोल दे, एक प्रॉपर इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री का नाम हमने दिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पर सारे इंडस्ट्री साइज के इक्विपमेंट एंड मशीनरीज रहेंगे। यहाँ टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज में रहता है, यहाँ ट्रेनर्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज रहेंगे और यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग चलेगा। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसे मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया या आईटी पार्क में खोल सकता था, पर मैंने प्रपोज किया कि चलो मैं इसे लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस के अंदर खोलूंगा। ये कोई डमी या प्रोटोटाइप इंडस्ट्री नहीं है, एक्चुअल इंडस्ट्री है। हमने उसका नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है। और यहाँ पर इस फैसिलिटी में प्रोजेक्ट्स आएंगे कंपनीज से। यहाँ डिजाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, टेस्टिंग होगा, और यहाँ से प्रोजेक्ट बाहर कंपनीज को जाएंगे। मेरे टीम उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। और इस कंपनी का सबसे बड़ा वर्कफोर्स कौन रहेगा? वो आप जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के वो रहेंगे। आप मेरे टीम के साथ जुड़ेंगे, हमारे टीम के साथ काम करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट डिलीवरी समझेंगे और उसमें यू विल बी पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम। तो this is the concept which we are working, and I'm very proud to say that Lloyd Institute of Engineering and Technology took the initiative that we want to do something different. जब मैं आपके सर से बात कर रहा था, मनीष जी से बात कर रहा था, उनका कहना था कि हमें ना अलग से कुछ करना है। We want to be very committed to our students. We want to do things differently for them. We want to make a difference between Lloyd and any other colleges in North India or India. दैट डिफरेंशिएट्स कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करने के लिए देन दे टोल्ड दैट वी वांट टू हैव समथिंग लाइक दिस। और तब हमने इन्हें प्रपोज किया। हमारे पास में वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रोजेक्ट्स है। जैसे हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम काम करते हैं,
हम लोग इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट में काम करते हैं, हम लोग अभी स्मार्ट एग्रीकल्चर में काम करें जहां पूरे एग्रीकल्चर को हम स्मार्ट बना देंगे ड्रोन से सेंसर्स लगा के। फिर हम लोग पेट्रोकेमिकल में वी आर वर्किंग ऑन अ बिग टाइम ऑन ऑटोमोटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, वी आर वर्किंग ऑन फूड प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग एंड एआई एप्लीकेशंस। तो इस सारे चीजों में हम लोग ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोला हुआ है। और what we are proposing to your institute today is to open a center of excellence on electrical vehicle. So I'll just give you, ma'am, I'm audible? Yes, sir. Yeah, yeah. So we are proposing to open an electrical vehicle manufacturing unit in your campus. ये कोई शोकेस फैसिलिटी नहीं रहेगा, पर ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा। यहाँ पर एक स्केच से एक व्हीकल बनाना, स्केच के बाद में उसका क्ले मॉडल बनाना, उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाना से लेके उसमें फिर बैटरी सिस्टम्स, ट्रांसमिशन सिस्टम्स लगाना, उसे स्मार्ट बनाना, उसे आईओटी एनेबल्ड स्मार्ट बनाना, उसे ऑटोनोमस बनाना से लेके वो गाड़ी को बना के रियल में हमें लॉन्च करना। ये पूरा जो फैसिलिटी है ये हम प्रपोज कर रहे हैं आपके कॉलेज में स्टार्ट करने के लिए। This again, I'll repeat, this is not a prototype. This is an actual electrical vehicle manufacturing division which is going to come in your campus. ये हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, जहां पर आप आपके फर्स्ट ईयर से इस कंपनी में जाके काम कर सकते हो, इसे देख सकते हो। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचेस। ये खाली ऐसा नहीं कि ओनली फॉर मैकेनिकल है, दिस इज फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस, सबके लिए है। आप अगर टेस्ला का स्टोरी सुनोगे जाके, तो टेस्ला कभी भी ये नहीं बोलता कि वी आर ऑटोमोटिव कंपनी। दे से टेस्ला से दैट वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी। They very proudly say, go to the website and they say Tesla is a technology company. They never say that we are a car manufacturing company. उसने कहीं भी आप देखोगे तो टेस्ला ऑटोमोटिव करके नहीं लिखा है कहीं पर भी, टेस्ला ओनली। The same way we are planning to open a complete e-vehicle unit where everyone will have a role to play, and you will in your real life, when you're studying in your engineering college, will see a real vehicle getting developed inside your campus and you will be a part। आपका उसमें एक रोल रहेगा वो गाड़ी बनाने में। यू कैन प्राउडली से ये गाड़ी जो बना हुआ है आज मार्केट में है, इसमें मैंने ये काम किया था। ये लेवल का एक्सपीरियंस हम देंगे आपको। और जब आप कॉलेज से जब बाहर निकलोगे तो कोई भी कंपनी आपको लेगा, क्योंकि यू हैव वर्कड इन अ टेक्नोलॉजी कंपनी, यू हैव वर्कड इन एक्चुअल सिस्टम और आपका एक्सपीरियंस है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लॉयड? You will become an industry ready engineers with experience of 1 to 2 years। क्यों? क्योंकि आपने आपके फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से आपने इंडस्ट्री में काम किया है। आपने 4 साल काम किया है, पूरे 4 साल, लेकिन हम लिखेंगे 2 साल। आप इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहे थे। आपका एक्सपीरियंस है, आपको लैटरल हायरिंग के लिए लिया जाएगा, ना कि फ्रेश हायरिंग के लिए। आज की डेट में जो भी बच्चा फाइनल ईयर से बाहर निकलता है, कैंपस में जब बुलाया जाता है तो क्या बोलते हैं, हम फ्रेश हायरिंग कर रहे हैं। पर हम लोग ने चेंज कर दिया उसे चीज। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये फ्रेश हायरिंग नहीं है, ये दिस इज अ लैटरल। लैटरल मतलब जहां पर भी जो एक्सपीरियंस लोग को जब हायर किया जाता है कंपनी में, उसको लैटरल हायरिंग बोलते हैं। तो वी विल से दैट now onwards, students of Lloyd Engineering College are all experienced workforce. They are not freshers. We will change the whole dimensions of representing students from Lloyd. And this will be there with students of Lloyd only, not with anyone else. And again, to be very proud to say, अगर जो हम अभी हमारी बात चल रही है कि ई व्हीकल का जो बात कर रहे हैं, इफ योर कॉलेज में ये ई व्हीकल का सेंटर चालू होगा, तो योर कॉलेज विल बिकम द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, आई एम नॉट सेइंग नॉर्थ, आई एम सेइंग इन इंडिया, टू हैव अ कंप्लीट ई व्हीकल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इनसाइड द कैंपस। ये आपका पहला कॉलेज रहेगा इंडिया में। इवन टुडे आईआईटीज और एनआईटीज में भी ये फैसिलिटी नहीं है टू दिस लेवल। ये आपका कॉलेज विल बी द फर्स्ट कॉलेज। Very important thing is internship. I think ma'am who was speaking in the beginning was talking about internship, paid और unpaid की जो बात कर रहे थे। तो internship जो होता है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑफ योर इंजीनियरिंग एजुकेशन, कि आपका इंजीनियरिंग एजुकेशन कैसे आगे जाएगा।
इंटर्नशिप इन शॉर्ट का इसका मतलब समझा देता हूँ, क्योंकि आप 12th पढ़ के आए हो, इवन मेरा बेटा का भी अभी 12th हुआ है। तो इंटर्नशिप का मतलब ये होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग नहीं होता, ये आप याद रखना। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी के पास जाते हो, वो कंपनी आपको उनका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है, उनका एक चैलेंज, उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देता है, और ये आपको कहा जाता है कि इसके ऊपर आप सोल्यूशन बिल्ड करके दो हमें, इसके ऊपर आप एक सोल्यूशन बिल्ड करके दो। तो इंटर्नशिप में आपको उनका प्रॉब्लम स्टेट के ऊपर एक सोल्यूशन बिल्ड करके यू हैव टू गिव इट टू द कंपनी, एंड अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू गिव द सोल्यूशन टू द कंपनी, दे विल पे यू फॉर दैट। Most of them they hire you also. Now I'll tell you the mathematics of internship. The average internship in most of the engineering colleges, I'm saying most of the private engineering colleges across India, is 1 or 2 internships in 4 years. 1 or 2 internships in 4 years, wherein students of IITs or NITs, they end up doing 10 to 15 internships in 4 years. कहाँ जो बच्चे ने 15 इंटर्नशिप किया, कहाँ जिसने 1 या 2 किया, उनके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, द वे दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। अभी क्योंकि आपका कंपनी आपके कैंपस के अंदर में है, तो आपको जितना इंटर्नशिप करना आप कर सकते हो। यू कैन एंड अप डूइंग 2 इंटर्नशिप पर सेमेस्टर्स। तो आपने फर्स्ट ईयर से अगर चालू कर दिया, तो फाइनल ईयर होने तक आप आराम से यू कैन डू 15 to 16 इंटर्नशिप्स, विच विल विच यू हैव टू राइट इन योर सीवी। आपके सीवी में आप लिख सकते हो कि मैंने ये सारे इंटर्नशिप्स किए हैं, इस कंपनीज का इंटर्नशिप किया है, ये इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ये मेरा सोल्यूशन था। ये पूरा सीवी में, जहां आप 1 या 2 पेज का सीवी बनाते हो, आप 5 से 8 पेज का सीवी बना सकते हो ग्रेजुएशन करते करते करते। आई थिंक मैम वॉज सेइंग समथिंग ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के डाल सकते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट्स किया है करके। You, while doing your graduation itself, your LinkedIn profile will look like a person who has worked for 6-7 years. ये लेवल का आपका एक्सपोजर रहेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखे, देर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। आपने जो चीज एक्सपीरियंस किया है, वो आपने किया है। आज ये मीटिंग के पहले आई वॉज देयर विथ वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ मैं बैठा हुआ था। तो ही गेव मी अ वेरी गुड एग्जांपल। व्हेन मैं ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं उनको भी समझा रहा था, तो उन्होंने बड़ा ऐसा अच्छा सा एग्जांपल दिया मुझे कि आप ये भी बताओ अभी आगे से, कि आपने यूट्यूब खोल लिया और वहां लिख दिया हाउ टू स्विम करके, तो आपको यूट्यूब में पूरा ऑप्शन दिखाएगा कि ऐसा करके आप स्विम करो, ये करो। आप उसी बंदे को, मिनिस्टर साहब ने बोला कि आप वो बंदे को एक्चुअल स्विमिंग पूल में डाल देना यूट्यूब में सिखाने के बाद में। जैसे वो स्विमिंग पूल में उतरेगा, वो सारी यूट्यूब का ट्रेनिंग भूल जाएगा, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या करना है करके। ही विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड ही विल नॉट बी एबल टू स्विम। तो यूट्यूब में आप सीख देख लोगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू एक्सपीरियंस। तो यू आर गोइंग टू गेट द चांस ऑफ दैट एक्सपीरियंस इनसाइड योर कैंपस। मैम, am I audible? I hope things are online. Just Yes, for a sir. Yes, feedback. sir. You are audible. And hope I'm making sense to your students. Yes, sir. Thank you. And the next thing is a value for in terms of campus hiring, improve employability, publication, patents, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन करना है। और आप में से जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आज बहुत सारे बच्चे इंडिया से यूएस जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। जब आप यूएस जाते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो दे विल आस्क फॉर योर कंप्लीट सीवी कि आपका क्या क्या किया दिखाओ। तो वहां पर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो और आप ये चाहते हो कि वहां जाके आपका अर्निंग हो जाए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, नंबर 1। नंबर 2 इज गेट होल्ड ऑफ अ गुड प्रोफेसर। हम अच्छा प्रोफेसर हमारा इंडियन टर्म में किसको बोलते हैं? वो प्रोफेसर जिसके पास में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट का मतलब उसके बाद फंड्स है। तो वो क्या करता है प्रोफेसर? ये फंड्स स्टूडेंट्स को देता है। तो यू स्टार्ट अर्निंग देयर। अगर आपका सीवी बहुत स्ट्रांग है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया है, तो आप सारी चीज लिखोगे, तो प्रोफेसर आपको इमीडिएटली ले लेगा कि आओ तुम मेरी ज्वाइन कर लो करके, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग व्हेन यू ज्वाइन फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन। द नेक्स्ट इज द वैल्यू फॉर स्टार्टअप्स। हम लोग ने ये सेंटर एक्सीलेंस में एक तो स्किल और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। आज की डेट में आगे करियर बनाना है, तो आप आइदर यू बिकम एम्प्लॉय सम कंपनी और यू बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप खुद का भी बिजनेस चालू कर सकते हो।
पर काफी लोग आप में से होंगे इंटरेस्टेड जो चाहते होंगे कि मैं खुद का बिजनेस चालू करूं, पर खुद का क्या बिजनेस करना है उसका कोई आइडिया नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है। अगेन इन टुडेज मीटिंग, जब मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा था आज मीटिंग में पेट्रोकेमिकल के ऊपर में, तो मुझे सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आ, हम लोग ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसका, ही वॉज आस्किंग मी। तो मैंने उनको ये बताया था कि अगर आपके बच्चों लोग को एंटरप्रेन्योर बनना है, कंपनी खोलना है, तो उन्हें आइडिया तो रहना चाहिए ना करना क्या है करके। आज बिजनेस चालू करना है तो लोग के दिमाग में ना दो तीन, मेरे समय में तो दो तीन दिमाग में आते थे कि दुकान खोल लेंगे, ये कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे। और आज की डेट पे जो बच्चे हैं उनके दिमाग में आता है हम एप्स बना देंगे, एक एंड्रॉइड ऐप बना देंगे, हम ये बना देंगे और ऐप बना के हम कर लेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस उससे ऊपर उठ ही नहीं रहा है। एप्स में कितने लोग सक्सेसफुल है, सब नहीं हो पाते हैं। आप बिजनेस तब कर सकोगे जब आपके पास आइडियाज आए। और मैं आपको और एक फिगर बताना चाहता हूं जो आप लोगों को सुन के बड़ा अच्छा ना लगेगा। द सक्सेस रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इज हार्डली 2%, 2 to 3%। यानी कि 100 लोगों ने बिजनेस चालू किया था, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों ने बिजनेस को 2 साल के ऊपर चला पाए, बाकी 97 लोगों ने बिजनेस को बंद कर दिया 2 साल के अंदर में। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जो स्टूडेंट्स थे, दे आर ऑल यंग यूथ्स हु ग्रेजुएटेड आउट ऑफ द कॉलेज और दे वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट दे लैक्ड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग बिजनेस। उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दे लैक मेंटर्स टू हेल्प देम। तो हम लोग ने यहाँ किया है कि वील ओपन अ स्टार्टअप, वील ओपन इंक्यूबेशन सेंटर। ये इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा जनरिक पब्लिक के लिए नहीं रहेगा। इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव एटलीस्ट वर्क ऑन 5 प्रोजेक्ट्स। आपने अगर 5 प्रोजेक्ट्स में काम किया है और 5 प्रोजेक्ट्स के डिलीवरी को हैंडल कर चुके हो, और उसके बाद आप चाहते हो कि मैं बिजनेस चालू करूं, तब हम आपको यहाँ पर स्पेस देंगे एट अ वेरी रिजनेबल कॉस्ट, एंड आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो यहाँ से। और you can even think of starting your business in your second or third year. मैं सेमेस्टर नहीं बोल रहा हूँ, ईयर बोल रहा हूँ। You can start thinking of starting your business in your very much in your third year and start earning money also. So that is where we will help you. What is the value for industry? इंडस्ट्री को हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप लॉयड आते हो कैंपस हायरिंग के लिए, मैं वो 1% कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो 99% कंपनी जो कैंपस हायरिंग नहीं आते उनको मैं बात कर रहा हूं कि आप अगर आओगे तो आपको यहाँ पर इंडस्ट्री रेडी डोमेन एक्सपर्ट्स मिलेंगे। आपको एक सिंगल लोकेशन में पूरा पूल मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस वर्कफोर्स मिलेगा। इन्हें आपको कोई ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं है। आप इन्हें हायर करो, ये अगला दिन आपकी कंपनी में काम करेंगे और आउटपुट देंगे आपको। तो इंडस्ट्रीज आर वेरी इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये छोड़ देता हूँ। ये कुछ मशीनिंग्स का है, फोटोज डाल के रखा है मैंने, जो ये सारे मशीन्स रहते हैं हमारे फैसिलिटीज में। These are all prospect hires who we have a discussion, who are interested to hire student from our facilities. So in short, this was my presentation on this particular program. So I'm done with my presentation. If you have any questions, you can ask me. Students, if you want any question, if you ask any question, then it is open for you all. Hope first of all, like I think it was okay. I've kept a small time so that I could brief them, make idea very clear with them so that they can understand what is the requirement of the day. Yes, sir. Thank you, sir. Unsuccessful people make decisions based on their current situation. Successful people make decisions based on where they want to be. So thank you, sir, for sharing your valuable key points with our students, such as what is industry-ready engineers and what kind of skills are required to achieve their goals. I think the students have heard well and will work very hard for their career. Now, I would like to call Dr. Smriti Tripathi for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Greetings of the day. On behalf of Lloyd Institute of Engineering and Technology, I, Dr. Smriti, would like to express my gratitude towards the management of Lloyd Group and our dynamic group director,
Professor Dr. Vanna Sethi ma'am for their continuous supports and motivation for organizing the whole program and sharing an innovative way of learning in engineering with our newly admitted students. I'm extremely grateful to our esteemed speaker, Mr. Rahul Naidu, who has very aptly enlightened our budding engineers by telling the difference between the knowledge and skill and how the student can enhance their employability by developing their skill in an engineering field. I would like to thank Professor Dr. Manish Saraswat for providing a strong framework for the whole program and grateful to Ms. Rashmi Mishra, whose continuous efforts have made this event successful. I would like to express my gratitude towards the members of the organizing committee, Ms. Rupa Rani ma'am and Ms. Sananjum ma'am for their continuous support. And I'm really thankful to all the participants, our beloved students, and our esteemed faculty members for making this event successful. Last but not the least, I'm thankful to the technical and supporting staff of Lloyd Institute for putting in great effort for making this event successful. Thank you so much. Thank you, everyone. Over to you, Rashmi ma'am. Yes, thank you, all of you. Hmm. So today we are coming over ending of this session. Kindly leave the meeting for today. We will be joining on Friday again in this week. Good day, everyone. Thank you.